अक्सर बच्चा माँ के साथ खाना खाता है। माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चा खाना खाए, कितना खा रहा है, क्या खा रहा है, ये सब माँ को डिसाइड करना होता है। बट जब वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, दोनों पेरेंट्स ऑफिस जा रहे हैं, उस केस में या ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं जिनके साथ बच्चे रहते हैं और वो खाना खिलाते हैं, या नैनी रहती है, हायर्ड हेल्प कोई। एवरीवन हु कम्स टू द टेबल एंड फीड्स विद द चाइल्ड comes with some expectation. वो अपने तौर तरीके यूज करना चाहता है. Hi, I am Riddhi. I am a child nutritionist and a behavior expert and founder of Baby Led Weaning India. And in this video, I am going to tell you about कि आपका बच्चा जिसके साथ खाना खाता है, उसका बिहेवियर कितना इम्पैक्ट करता है बच्चे के खाने पे ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। ये मैं ये भी बताऊंगी इन द एंड ऑफ द वीडियो कि किसके साथ बच्चे को एक्चुअल में खाना खाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं ग्रैंड पेरेंट्स की। सो दे शेयर अ ब्यूटिफुल बॉन्ड। ग्रैंड पेरेंट्स को क्या चाहिए कि हमारा बच्चा है, सो नाउ बिकॉज वी आर फ्री वी विल टेक केयर ऑफ द चाइल्ड। A lot of time grandparents actually listen to parents, वो follow करते हैं जो parents बोल रहे हैं, but many a times they come with their own very strong perceived notion. उन्हें क्या लगता है कि उन्होंने जो 30-40 साल पहले किया, that is the status quo. But सब कुछ चेंज हो रहा है, राइट? हम ग्रो हो रहे हैं, तो जस्ट बिकॉज कोई चीज काम करी है 40 साल पहले, वो अभी भी ट्रू हो, दैट्स नॉट राइट। सो बच्चे का खाना फिनिश करना, जो अक्सर ग्रैंड पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, या ज़्यादा दूध देना थ्रू द डे, और खाना खाए या ना खाए फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी ग्रैंड पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू आता है। तो अगर बच्चा, आपका बच्चा अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहता है या आप छोड़ के वर्क करने जाते हो ऑफिस में, all of this will start impacting how your child feels about food. So it is very important for you to talk to the grandparents about your expectations, about your ethos. I do understand that there is someone taking care of the child behind you. So it's also not like really good on our part to keep instructing them, and that it can also create some tiff between the families. So I'm not suggesting you to disregard their approach completely, but you do have to keep some boundaries in place. Number two is the nanny hired help. You won't believe, in one day, I think a week ago, I had 10 calls, and उसमें से 7 people, 7 families I spoke to, उन सातों को प्रॉब्लम थी कि नैनी ने अपने तौर तरीके ऐसे ज़्यादा इंट्रोड्यूस कर दिए थे कि या तो वो मॉम को गिल्ट में लाती थी कि बच्चा मेरे साथ बेटर खाना खाता है, आपके साथ नहीं खाता, और या एकदम इग्नोर कर देती थी। इवन दो पेरेंट्स बोलते भी थे कि ये नहीं करो, पर वो सुनते नहीं थे, बट द पेरेंट्स वर सो फियरफुल कि वो छोड़ के चली जाएगी काम, और कौन मिलेगा, बच्चा इसके साथ अडेप्ट हो गया है, एडजस्ट हो गया है। नैनीज को आपको बहुत ही स्टर्नली बोलना होगा कि आई अंडरस्टैंड दैट यू आर trying to feed the child, you want the child to be full, but this is not a way, and she's your hired help, so you need to have some very firm expectations over there, because you don't want कि जो इंसान आपके लिए 6-8 या 1 साल काम करने आया है और कुछ महीनों में वो चला जाएगा, वो आपके बच्चे का लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप बना रहा है खाने को लेके विदाउट फॉलोइंग यू, क्योंकि वो तो चला जाएगा, फिर आपको सब कुछ अंडू करना पड़ेगा, राइट? एंड इट इज नॉट ईजी, और जब खाना भी चेंज हो जाता है तो उनके लिए और डिसरेगुलेशन। सो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेल योर नैनीज और एनी हायर्ड हेल्प दैट they need to follow the boundaries which you are creating. Take everything which they say with a pinch of salt. Number 3 is school. जब आपका बच्चा डे केयर या स्कूल जाता है तो वहाँ पे क्या तरीका फॉलो होता है वो बहुत इम्पैक्ट करता है बच्चे को। देयर हैव बीन टाइम्स वेयर 4 साल के पेरेंट्स के बच्चे मुझे बोलते हैं, दीदी मेरी बेटी घर पे एकदम नहीं खाती, कोई खिलाना होता है बच्चे को, बट जब स्कूल जाती है शी विल ईट एवरीथिंग। दैट्स बिकॉज एक तो स्कूल ने एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया है, विच इज वाई इट इज इम्पैक्टिंग द चाइल्ड इन अ more better way, in a positive way. Whereas घर पे उसको चाहिए कि स्कूल में इतना सारा स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट में फॉलो करके आ रही हूँ, तो घर पे वट एवर आई वॉन्ट आई विल डू, और आप बाउंड्रीज फॉलो नहीं कर रहे हो। So it is important for you to be in sync with the school. But there are also some school जो बोलते हैं कि आपकी बेटी तो हमारी बात ही नहीं सुन रही है, आप फिगर आउट करो, वो यहाँ खाती ही नहीं है। Now that's not the kind of school you want to choose, because they need to help you with this problem. They can't just keep it aside and say you figure it out. The child is going in their environment, so it is their job to make sure that the child feels safe, seen and happy, because if especially that is the school you are planning to keep the child in for a longer time. And if the school has ammas or the teachers who really force children into eating,
who scold them if they're not eating. All of this can make the entire feeding environment very traumatic for the child. And if you see any red flags, call it right away. It's very important because your child is spending 5 to 6 hours in an environment which is away from you, away from their safe zone, which is their house. So it's very important for us parents to be vigilant of it. Number 4 is father. With fathers, children are quite playful. बहुत ज़्यादा बच्चों में टैक्टाइल मोशन होने लगते हैं जब फादर्स आते हैं. स्पेशली आप देखोगे जब फादर्स आते हैं तो बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं, प्ले करना चाहते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं. So it's great. This is an opportunity you can definitely use. When times through the day, you are the one who's taking care of the child. And when the dad comes in the picture after office or after a long working hour, make sure that you do that meal with the dad. If you also go out to work and both you and dad are coming almost at the same time, then make sure that both of you are eating together as a family with the child. But it is okay, absolutely okay, to give the dad responsibility for at least one meal a week. कि संडे का ब्रेकफास्ट आप फिगर आउट करो, डैड को बोल दो, वॉफल बनाओ, पैनकेक बनाओ, जो बनाओ, डोसा, इडली, बट डैड के ऊपर छोड़ दो आप. एंड देन let the child enjoy that meal with the dad, because with dad the pressure is less. A lot of times with mothers the pressure is more because we do expect our children to eat more and more, but with that they are more playful, the pressure is less, so automatically meal environment thoda happy sa ho jata hai, unless the dad also has a lot of pressure attitude. In that case you will have to balance him. क्वांटिटी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, एटीट्यूड की बात कर रही हूँ कि बच्चा थोड़ा हैप्पी रहता है व्हेन इट कम्स टू फीडिंग विद डैड एज कंपेयर टू एनी अदर फैमिली मेंबर. Number 1, the most important person in your child's life, you, mother. Now, I'm assuming that you're a mother who's watching, but if you're a dad who's watching, you need to share this with your better half because she needs to know this. And I want you to like and subscribe this channel. And also, do not forget to tell me who is the most important person in the house who eats with your child. Now, with the mother, थोड़ी एक्सपेक्टेशन तो ज़्यादा हो जाती है मदर्स की, राइट, कि वो इतना तो खाना चाहिए, इतना भी नहीं खाएगा तो बढ़ेगा कैसे. प्लस स्पेशली वर्किंग मदर्स थ्रू द डे व्हेन वी कम बैक, it's hard. If the child is eating well, we think that we are not spending enough time with the child. So there's always something we feel that we are missing out. Now, I am completely pro anybody eating with the child, but with a mother, the child shares a very different bond, जो किसी और के साथ बच्चा शेयर नहीं करता. So it is important for the mother to be an example here, lead with an example, that if you as a mother are calm and regulated, आपकी टोन ऊपर नीचे नहीं होती बच्चे के रिजेक्शन के कारण, आप परेशान हो जा रहे हो तो क्या होता है, बच्चा प्रेशर फील करता है, और जहां बच्चे प्रेशर फील करते हैं खाने खाने में, वो गिव अप कर देते हैं. बच्चे की बॉडी फाइट या फ्लाइट मोड पे चली जाती है कि या तो वो टैंट्रम ही करते रहेंगे या तो वो एकदम गुम हो जाएंगे कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है. बट वी डोंट वांट ईदर ऑफ दी सिचुएशन. अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो अंडरलाइंग इश्यूज देखो कि आप अभी खाना खिला रहे हो 7:30 बजे, ऐसा तो नहीं कि 7 बजे उसको किसी ने कुछ खाने के लिए दे दिया था. एक बिस्किट भी होगा ना तो बच्चा का तो छोटा सा पेट है, उसके फिस्ट के बराबर, वो तो भर जाएगा, इनफ भर जाएगा कि खाना ना खाए. अगर बच्चे को डिस्ट्रैक्शन की आदत है तो आपको ये समझना होगा कि बच्चे का ब्रेन डोपामीन चाहता है, तो जब तक डोपामीन नहीं आएगा तब तक वो मुंह नहीं खोलेगा, विच इज अगेन अ नॉट गुड डिपेंडेंसी. You need to get rid of the distraction. So please be pressure free when you're feeding the child. Calm environment mein rakho. So it is important for you to teach your child about happy environment when it comes to food and not stressful. So who your child should be eating with, I have explained it in the description of this video. Do not forget to read it. I hope you guys have gotten a lot of value from this video. I will see you again in the next video, but do not forget to like and subscribe this channel. I'll see you. Bye.